इंडिया के 120 साल की ओलंपिक हिस्ट्री में इस साल का टोक्यो ओलंपिक सबसे सक्सेसफुल कंपटीशन रहा है। इंडिया रजिस्टर्ड इट्स बेस्ट एवर ओलंपिक मेडल टैली एट टोक्यो 2020 with 7 medals in the bag, including 1 gold, 2 silvers and 4 bronze. Let's have a look at the top 5 Indian performers at the Olympics. पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने अपने करियर का दूसरा ओलंपिक मेडल जीता इस साल विमेन्स सिंगल इवेंट में एंड became the first Indian woman to win 2 individual Olympic medals. After bringing home silver from Rio 5 years earlier, Sindhu this time won the bronze medal after defeating China's Hebing Zhao 21-13, 21-15. Lavlina Borgohain। ओलंपिक विनर्स विजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद बॉक्सिंग सीन में एक नई फाइटर उतरी, लवलीना बोरगोहेन। Lavlina won India's third Olympic medal in boxing after securing the bronze in the women's welterweight division with her victory over 2018 world champion Chen Nin-chin in the quarterfinals. Ravi Dahiya। Speaking of some dramatic turnarounds in the Tokyo Olympics, one needs to mention Indian wrestler Ravi Dahiya, who produced an inspiring comeback in the semi-finals of the men's freestyle 57 kg category. खेल के आखिरी 90 सेकंड्स तक दहिया 1-9 से पीछे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी and produced a sensational move to pin Kazakh wrestler Nurislam Sanayev to move to the final. इस stunning comeback के बाद रवि दहिया unfortunately reigning world champion Zavur Ugov के against final हार गए, but the Haryana native made the nation proud after becoming only the second Indian wrestler after Sushil Kumar to win silver at the Olympics. Mirabai Chanu। Psycho Mirabai Chanu lived up to the nation's expectations and kicked off India's 2020 Olympic campaign with a bang after winning a silver medal in the women's 49 kg weightlifting category with her total lift of 202 kgs. वेटलिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल के 21 साल का इंतजार खत्म हुआ with Chanu breaking an Olympic record with her successful 115 kg lift in the clean and jerk segment. Neeraj Chopra। The man with the golden arm, Neeraj Chopra made history at Tokyo 2020 after securing the gold medal in the men's javelin throw with his 87.58 meters throw in the final. पानीपत से बिलोंग करने वाले 23 साल के नीरज न सिर्फ दूसरे इंडियन है अभिनव बिंद्रा के बाद टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, बट ऑल्सो इकलौते इंडियन एथलीट है जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। That's it for now. But for more amazing content from the world of auto, sports, entertainment and lifestyle, head across to manslife.in.